In what fields you can go for jobs and all? Being a chemical engineer. Yes? No one? Yes? Uh, okay. Higher education. Processing. Okay, you can go to processing. Anybody else? Yes? Piping and layout. Anybody else? Pharmaceutical, chemical, biomedical. Okay. Manufacturing, mining, metallurgy. Fine. So you have huge scope in diverse fields as a chemical engineer. Okay. So let me introduce ourselves. Like, why are we here first? So we are from Yourpedia Global. I am Kavita Thakur, and we are here to sensitize you about higher education opportunities outside India. Okay, because many of you want to go outside India, but you are afraid to go, or you think that it will cost too much of money, and we are not capable to do it, and all that stuff. Okay, you have these things in your mind, and you don't think about going outside. See, if you don't try, you will not get. Okay, so we are here to tell you how you can go there, what opportunities you have, and it is a very simple and what the process is of going outside India. Fine. So basically, first of all, I would like to tell you why we want to go outside India, why not in India. So can anybody tell me that why should we go outside India and not in India? Then I will tell you. Anybody? Any answers? Okay. So first of all, you are getting diverse subjects over there. Exposure to lot of subjects are there, and that also skill based, and research is very good over there. Do you agree? You get to hire lot of diverse subjects you can take up, which might not be available in India. Okay, so that is why, and obviously skill is higher over there. You must have heard that in research whatever is going on, and big machineries and everything, because wherever you go you have lot of infrastructure over there. Okay. Then another thing is you get exposed to diverse culture also. You get to interact with students all over the world. We are talking about global citizens these days, and if you want to get jobs, you should have exposure to all kind of atmosphere that is prevailing outside India. So if you stay in India, you will not get exposure to all that. Okay, so you in job whatever is required, okay, you get exposure there, you get in contact with students who are of diverse culture, and also you develop your own. See, हम लोग कहते हैं कि alumni है और ये यहाँ है वहाँ है, बोलते हैं ना. तो जब आप बाहर जा रहे हो तो आपका alumni base कितना strong होगा. कल को आपको कुछ रिसर्च के लिए कुछ जरूरत पड़ रही है, आपको कहीं जॉब का कुछ पूछना है, you have peers all over the world. Okay, and you can get in contact with them. Fine. तो एक आपका प्रोफाइल बिल्डिंग हो रहा है वहां पर जाके. प्रोफाइल बिल्डिंग किसमें हेल्प करता है? अगर आप बाहर जा रहे हो तो हो सकता है आपको वहां की पीआर मिल जाए, आप वहीं पर सेटल हो रहे हो, वहां का लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हो. फाइन. और अगर आप इंडिया में भी आते हो तो आपके पास है कि आपने बाहर से कुछ किया हुआ है. यू हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया ऑल्सो आफ्टर दैट इफ यू वांट टू रिटर्न टू इंडिया. यस. ओके. एंड मोर ओवर आपका मतलब ऑब्वियसली आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम कल्चरल के साथ तो होते ही है, पीयर आपका बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है वहां पे, फ्रेंड्स बन रहे हैं आपके. अगर आप देखोगे तो इवन इन IITs इफ वी सी ऑल द प्रोफेसर्स हु आर देयर, तो हर एक प्रोफेसर के नाम के आगे कहीं ना कहीं से बाहर से उन्होंने कुछ ना कुछ किया होता है. दे हैव डन समथिंग और द अदर फ्रॉम आउटसाइड, तभी वो IIT तक पहुंचे. सो आपको हाई प्रोफाइल जॉब्स चाहिए तो आपको बाहर से कुछ करना पड़ेगा. सो बेस्ट ऑप्शन इज, और आजकल आपको पता ही है हायर एजुकेशन से ही आपको जॉब्स मिल रही हैं अब ज्यादा. ठीक है, मास्टर्स तो आपको चाहिए ही चाहिए आज की डेट में मिनिमम. ओके. सो इफ यू गो अब्रॉड, यहां से करोगे तो ठीक है, यू विल गेट अ जॉब, बट अगर आप बाहर से करोगे तो आपको हाई प्रोफाइल जॉब्स मिलेंगे. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन गेटिंग जॉब्स इफ यू डू इट फ्रॉम इंडिया एंड इफ यू डू इट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. फाइन.
So we have a lot of processes involved, which my teammates will be telling you. Let me introduce them to you. Mr. Ankit, he's from Canada, and Mr. Kailash. Okay, so they'll also be like talking to you and like telling you how you can go outside India and what opportunities are there, because being chemical engineers, lot of opportunities are there. Even in Canada, like maybe they have listed out like 2,000 posts will be there till 2031. Okay, so you have huge opportunities being chemical engineers. So now I would like to hand over the mic to Mr. Kailash. So he'll be telling you about things. Okay, thank you, ma'am. Am I audible like this only? Is it okay? Yes. Okay, fine. I will continue like this only. So first of all, it's very difficult to sit in one place, especially in the final years of college. So we will not take much time. So it's just 1 hour session, right? So let me introduce entire process, basically what all we are going to discuss today. So you all people have spent last 4 years in this beautiful campus, right? So that was your academic journey. So now what is coming next? So that is different. That may be academic again in terms of higher education. But for many of you, it might be professional world or industrial or corporate world. So the point is, now you are at the verge where you are going to make transition from your education or from your academics again to the academic, higher academics, or into industry. So this transition is a roller coaster ride, to be honest. So I have more than 13 years of experience in both academics and industry. That too in both product industry and service industry. And that too in academics with some good premier institutions. So where basically a student, when he finishes academics and enter into a professional worlds or corporate worlds, what problem basically he face? So those problem changes with the era. You all agree to me, today we are in the digital era, and today we are in the technology era where things are changing so rapidly, technology is so disruptive, we cannot trust and we need to be aware what is going around us. Unfortunately, we all are on a ride. We don't know where we are going, where we are heading towards, but yes, we are in sync with the technology, then we will be in some beautiful place. If we are lagging behind the technology, then we will be sitting somewhere in the forest. You will have a very dark career, dark future. So I will start my discussion with this. So now, as Kavita ma'am quoted earlier, that why abroad, why not India? So I'm not going to give you people answer. I'm not going to give you people suggestion. I'm not going to tell you people stories. You all know. You all are in the final year of your BTech. So tell me one thing, you people have project, yes or no? You all did project, yes or no? Right? Fine, great. Many of you might be having good internship also, right? Yes or no? Great. Many of you might be having good projects, yes or no? Great, right? But you people answer me, if you want to take admission in the MTech with IIT, with NIT, with triple ITs, these things matter or not? No. Only one thing matter, that is your GATE score and your academics. Yes or no? Agreed or not? So this is the answer itself. Then why these things are incorporated into our curriculum of BTech? What is the reason behind that? There was a motive. There is an objective. There is a motive. But unfortunately, in India, these things are not taken into consideration when you are going for master degree programs from the IITs and NIT. But at the same time, if you see abroad, if you see with the global universities, they never consider only one parameter. They take your impactful profile. They see in the balanced profile, which basically comprise what is your CGPA, what are your internship, what are your projects, and what all publication you have done. So it means, guys, this is the biggest difference between Indian education system and abroad education system. In India, unfortunately, our education system is dominated by your performance in the exam. Irrespective what all you have done in the curriculum, right? You have the 4-year degree program. You might have done n number of publications, n number of projects, n number of internship, but they are not evaluated. You all agree to me, right? So this is the first difference why one should think of abroad.
Reason being, all the universities abroad, they want to see you as a person, how much capable you are into academics, how much capable you are into collaboration tasks, how much capable you are in the teamwork and to work as a group, how much capable you are doing a good problem solving skills. These all things are taken into consideration. So that is the first point where I suggest each individual, if you believe you are lacking in the GATE performance, you don't have a very good GATE score, you don't have a very good CGPA, but you have aspiration to do good research, you want to make some product, you want to learn technology, you want to find the solution for the real world challenges, but your score, your performance in the competitive exam, they are the barriers. Then think of the international education. You see in your surrounding, any of the student, in your colleague, in your relative, in your friendship, in your senior, junior, whosoever is pursuing his education abroad, he will be never very superior in the academics only, but he will be really a great personality in diverse domain. That is why whenever you see the same colleague, one doing MTech from the IIT Kanpur and one doing MS from the Germany, if they both are employed in the same company, let us suppose Microsoft, let us suppose Google, let us suppose Apple, both are having the different perks, different profile, different facilities. Because if one person is coming to Google after doing master from IIT Kanpur and one person coming to Google after doing master from Germany, both reputation will be different. Because Google knows the conditions of education system in India. I'm not saying it's bad, it's good, but there is a lot of improvement required. So this is the first point. I hope you all agreed. I'm not going to answer this. You all know. I just try to aware you people about it. I hope you all agree this, right? Second point is, see, in today's time, guys, our networking is our assets. We are sitting here. In digital era, the world entire is a global village. You can access any information anywhere else. USA, Canada, Germany, any information you can access right now from the campus. Then why you people are not taking your step in that direction? I'm introducing my second question. This is not a point of contradiction, or I'm not doing any distinction between IIT, NIT and PU. Whenever student from NIT and IIT approach me, they simply ask me, sir मुझे internship के लिए जाना है, 3rd semester में, 4th semester में. उसका अगला क्वेश्चन होता, पूरा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, सर आई वांट टू गो फॉर इंटर्नशिप बट आई वांट टू गो यूएसए, आई वांट टू गो जर्मनी, आई वांट टू डू कनाडा. अब वहीं पे मुझे कोई स्टेट यूनिवर्सिटी या स्टेट कॉलेज का बच्चा आके बोलता है कि सर मुझे इंटर्नशिप करनी है, बट उसका पता क्या आंसर होता है, सर मुझे आईआईटी प्रोफेसर के पास करनी है, एनआईटी प्रोफेसर के पास करनी है. व्हाई दिस स्टेयरकेस इज देयर? ऐसा क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज बिकॉज ऑफ द पीयर कल्चर. पीयर का एनवायरमेंट जो है, जब आपके सराउंडिंग में ऐसे पीयर्स रहेंगे जो एक बहुत अच्छे लेवल पे एक्सेल कर रहेंगे, तो आपको वो फोर्सफुली थ्रस्ट मिलेगा एंड यू विल ट्राई टू फॉलो द सेम रूट. एग्रीड और नॉट? यू ऑल आर कैपेबल यार, कम ऑन, राइट? यू ऑल हैव डन द इंजीनियरिंग, आप लोगों ने बहुत अच्छा एफर्ट डाला, आपके क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, तो व्हाई नॉट यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग इंटर्नशिप फ्रॉम अब्रॉड? व्हाई ओनली फ्रॉम आईआईटी एंड एनआईटी? रीजन बीइंग, वो हमने एक दिमाग में नोशन बैठा दिया, प्री कंसीव्ड नोशन है कि यार हमारे कहां यूएसए कहां जाएंगे, हम जर्मनी हम कहां जाएंगे. एवरीथिंग इज एक्सेसिबल नाउ. बहुत सारे ऐसे इंटर्नशिप है जो आप अपने ग्रेजुएशन में कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. नाउ यू ऑल विल बी ग्रेजुएटिंग एंड यू विल बी ज्वाइनिंग सम कॉर्पोरेट वर्ल्ड. हो सकता है आप हायर एजुकेशन में जाए, अलग अलग जगह पे जाए. एक चीज ध्यान में रखना सारे, आपका लर्निंग कभी भी रुकना नहीं चाहिए. योर लर्निंग शुड नेवर स्टॉप. चाहे आप 10 लाख पैकेज ले रहे हो, 50 लाख पैकेज ले रहे हो. I have my senior, junior colleagues and friends who are today taking the package of 1 CR, 1.5 CR. Still, in the Saturday and Sunday time, they are attending the courses, they are attending the classes, because technology is demanding the upgradation. And the same thing is happening in the academics also. आप लोग पेपर पब्लिश करते हो, कोई लोग जर्नल में करता है, कोई कॉन्फ्रेंस में करता है. एग्रीड और नॉट? अगर आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग में कोई पेपर लिख रहे हो और जो पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, भाई उसको कभी जर्नल में मत डालो, उसमें बहुत टाइम लगता है. जब तक तुम्हारा पेपर पब्लिश होगा तब तक टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी होगी. तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है. दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज. बेसिकली द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस. सो दिस सेशन टुडे इज ऑल अबाउट अवेयरनेस, दैट टुडे यू आर सिटिंग हियर इन द पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस, but you may aspire to join, MIT, Stanford, Princeton, Yale, these all university you may aspire to join in the future. But what is the point basically? The very first point is, अपने आप को कभी भी कम मत समझो.
You all have the potential, you all have the ability. अब पोटेंशियल और एबिलिटी से मेरा अगला डिस्कशन आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडमिशन इन इंडिया एंड अब्रॉड? Whenever you people will be applying for PhD, MS और MTech in India, क्या करना होता है बताइए? मेयरली जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, राइट? एग्रीड और नॉट? आपका स्कोर क्या है, आपके पास कितनी पब्लिकेशन है, आपका गेट में क्या स्कोर है, वो डिसाइड कर देगा आपका कैंडिडेटर. बट गाइस, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट अब्रॉड, अब्रॉड में सारा गेम आपके हाथ में होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सारा गेम आपके हाथ में होता है? See, whenever you are applying for PhD position, MS position abroad, you need to prepare some set of documents. The very first document is your CV. Second document is statement of purpose. Sometimes we call it motivation letter for Europe. Academic statement, personal statement. They will ask you some set of question. अब ये document क्यों important होते हैं? See, you are applying to some university in USA, UK, Canada. You are approaching some professor there. He don't know you personally. He will read your document, and through your document only, he will make decision about your candidature. So the documents must be drafted in such a way, they must speak your ability, they must speak your past experiences, they must speak your strength, they must speak your achievements, and they must speak that how you will be success in the corresponding program. So यहां पे जब डॉक्यूमेंट्स बनाने की बारी आती है, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो मेंटर्स होते हैं. दैट वी आर हियर द योरपीडिया ग्लोबल मेंटर्स. इट माइट हैपन लाइक दैट एक्स कैंडिडेट एंड वाई कैंडिडेट बोथ हैव द सेम CGPA, both have the same project, both are studying from the same university, but how they are portraying their story in the documents, that will make a different impression in the mind of reader. You understand or not? You might have seen a statement of purpose as a document. So that is a document basically through which you will be portraying your entire story from the, your school education to till date. So if you make that document very impactful way, your selection chances, your chances of getting admit is very high. Let me take one analogy. आप लोग सारे movies देखते हो, right? Movies देखते हो कि नहीं देखते हो बताइए? अगर आप कोई बॉलीवुड मूवीज देखने जाओ, कोई भी मूवी नया रिलीज है, you all will agree with me, 15 मिनट के अंदर आप गेस कर दोगे आगे क्या होने वाला है. Yes or no? At the same time, if you watch any international movie, Hollywood movie, वहां पे आपको 1-1.5 घंटे में भी कन्फिगर नहीं होता what is going to happen next. What is the difference? Difference is direction. कि कितना अच्छा डायरेक्शन हुआ है, वही आपके डॉक्यूमेंट बनाने में. अगर आपका डॉक्यूमेंट इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें हर एक चीज का ध्यान रखा गया है, वो एक स्टोरी नरेट कर रहा है, जो रीडर है उसके माइंड में हर टाइम पे क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, तो इसका मतलब योर राइटिंग स्किल्स आर रियली गुड. So these all things matter for the international process or international admission. See, the point is that you all know, you all might be a single batch, or you all might be belonging to a same batch. So you all know each other capability. तुम सबको पता है इसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है. कहीं ना कहीं कभी ना कभी इंस्पायर होते हैं उससे, यार उसके पास अगर ये तो मेरे पास ये क्यों नहीं है. आप सोचो अगर ग्लोबल स्टेज पे आप जाके कंपीट करते हैं, देयर यू विल बी कंपीटिंग विद द डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट इंटेंसिटी माइंडसेट कमिंग अक्रॉस द ग्लोब, नॉट ओनली फ्रॉम द इंडिया. और एक चीज आप भी मानते हैं, ये चीज आप डिनाई नहीं करोगे, शायद कुछ लोग करेंगे, आज भी आप लोग सोचते होंगे नाउ ओके इट्स डन, यू माइट बी हैप्पी विद योर डिग्री एंड प्लेसमेंट, कि अगर आपने यही 4 साल कहीं और बिताए होते तो शायद आप किसी और लेवल पे होते. वो रेग्रेट अब कुछ नहीं हो सकता, दैट इज डन नाउ, राइट? बट डोंट डू दैट सेम मिस्टेक अगेन फॉर द कमिंग टाइम. जो भी गलतियां आपने बैचलर पे करी है, डोंट रिपीट दोज मिस्टेक एट द मास्टर टाइम. मैं सभी को कहता हूं, अगर आप लोगों का सपना IIT जाना है, IIT JEE के टाइम पे आपकी अगर ट्रेन मिस हो गई है तो गेट एक दूसरा ट्रेन है. कितने लोगों ने गेट लिखा है? यहाँ पे गेट लिखा है सभी ने? गेट एग्जाम कितने लोगों ने लिखा है? कैन यू रेज प्लीज? ओके, अच्छा मुझे ये बताइए, व्हाट वाज द मोटिव, क्यों लिखा आप लोगों ने गेट एग्जाम? व्हाट वाज द रीजन? PSU वाज द रीजन. कितने लोग ऐसे जो हायर एजुकेशन के लिए गेट लिखे, सिर्फ कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन के लिए गेट लिखा है? है कोई ऐसा यहाँ पे? क्या क्या कहां पे हायर एजुकेशन करना चाहते हो? यू नो विच स्पेशलाइजेशन, विच IIT, एनी पर्टिकुलर IIT यू आर टारगेटिंग? देखो आप लोगों का जो आंसर है लिसन, वही डिस्कशन का पार्ट है. आई आस्क यू क्वेश्चन, कितने लोगों ने गेट लिखा है? आई गेस 20 स्टूडेंट रेज हैंड. बट कितने लोगों ने हायर एजुकेशन के लिए गेट लिखा है? किसी ने हैंड रेज नहीं करा है. अब यहां पे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, माइट बी यू डोंट वांट टू गो इनटू हायर एजुकेशन, राइट? दैट इज अ सेकेंडरी थिंग.
बट एक चीज ध्यान से सुन लीजिए सारे, अगर आपका हायर एजुकेशन में जाने का नहीं मन है, बट फिर भी एक बार एडमिशन प्रोसेस में जाओ। आईआईटी के कैसे फॉर्म भरते हैं, आईआईटी के इंटरव्यूज कैसे होते हैं, इसका मैं रीजन बता रहा हूं आपको। लास्ट ईयर देयर वाज वन गर्ल, शी वाज अगेन फ्रॉम द केमिकल इंजीनियरिंग। उसका पीएसयूज में जाने का ड्रीम था, राइट? बट पीएसयूज के इंटरव्यू होते हैं जुलाई अगस्त में। लेट मी टेल यू स्टोरी। और जो आईआईटी के इंटरव्यूज होते हैं वो आपके मई, जून या अप्रैल के आसपास हो जाते हैं। शी अप्लाइड इन आईआईटी एंड आईएससी ओनली फॉर द प्रैक्टिस, कि सर मेरा सपना है बार्क में जाने का, सर मेरे को गेट के थ्रू जाना है बार्क में या पीएसयूज में। पीएसयूज में भी एनपीसीआई उसका टारगेट था। एंड आई टोल्ड हर इन दोनों के जो इंटरव्यू होंगे बहुत डेप्थ में जाके होंगे, बहुत रिगरस इंटरव्यू होते हैं। उसने बोला कि सर प्रैक्टिस कहां से करूं? मैंने कहा प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका है आईआईटी बैंगलोर का फॉर्म भर, आईआईटी बॉम्बे का भर, आईआईटी दिल्ली का भर। वहां पे इंटरव्यू दे, प्रोफेसर के साथ वर्चुअल इंटरव्यू होते हैं। और वो जो इंटरव्यू की तैयारी होगी वो सबसे बेस्ट तैयारी होगी, उससे बेस्ट तैयारी कोई और इंटरव्यू की नहीं हो सकती है। उसने जाना नहीं था, उसने इंटरव्यू लगाया एंड फाइनली शी गॉट सिलेक्टेड इन द बार्क। तो पॉइंट इज यहां पे ये है कि अपॉर्चुनिटी मत देखो कि हाँ मेरे को तो सिर्फ पीएसयूज में जाना है, बाकी मैं क्यों करूं। अगर आपका उतना गेट स्कोर है, आप उसके लिए कैपेबल हो, आप जाओ, उसको भरो और अपने ड्रीम को अचीव करो। कहीं ना कहीं आपको कुछ ड्रीम को इधर अचीव करने के लिए इधर वाली चीजें भी करनी पड़ती, स्ट्रेट में मत जाइएगा। और दूसरा चीज, ये क्वेश्चन मैंने गेट वाला इसलिए पूछा है, आप लोगों में से कितने यहाँ पे अवेयर है कि गेट के थ्रू आप अब्रॉड भी जा सकते हो? क्या अवेयर है कोई? हाँ जी, कहां कहां जा सकते बता सकते प्लीज? यस प्लीज। एंटी सिंगापुर, एनयूएस, और कोई कंट्रीज? राइट राइट, ग्रेट ग्रेट। हाँ जी, बाकी सारे क्लैरिटी है। देखो अब दो चीजें आती है यहां पे, मैं डिस्कशन करना चाहता हूं। अभी आपके पीयर्स ने ही बताया कि विद गेट वी कैन गो एनटीयू, एनयूएस, परफेक्ट, गुड आंसर। जर्मनी में आरडब्ल्यूटीएच चेक-इन है, टीयू म्यूनिक है, सम अदर यूनिवर्सिटी आर देयर जहां पे हम जा सकते हैं। गाइज ये तो वो यूनिवर्सिटी है जो गेट को ऑफिशियली लेती है। अब आप एक चीज को एज्यूम करिए, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में इतने प्रोफेसर इंडियन है जो अपना मास्टर इंडिया से करे, जो पीएचडी इंडिया से करे, एंड दे ऑल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ गेट एग्जाम। कि गेट एग्जाम में अगर किसी स्टूडेंट का 95 या 98 परसेंटाइल से ऊपर है, इसका मतलब वो क्रेडेंशियल उसके बहुत स्ट्रांग है, उसके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है। तो अगर कुछ यूनिवर्सिटी ऑफिशियली सिलेक्ट नहीं कर रही है, बट आपको लगता है कि आपका गेट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, स्टिल फिर भी आप अपना प्रोफाइल बनाओ और एमएस और पीएचडी के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करो। तो इनडायरेक्ट मेथड भी होगा, डायरेक्ट मेथड भी होगा। दैट इज व्हाई बेसिकली टुडे वी आर हियर, वी वांट टू कीप दिस डिस्कशन दैट बियॉन्ड इंडिया you have lot of opportunity for MS and for PhD. Second thing you all know, that is the funding and scholarship. Right now it's very unfortunate that in India the scholarship for PhD is very less, even 40,000, less than 40,000. But at the same time, right now my colleague Mr. Ankit will be displaying the facts here. If you see the international market, students are getting 2.5 lakh scholarship per month, and they can save up to 1.5 lakh per month during the PhD scholarship only. So now you can see where the difference comes in terms of opportunity, in terms of quality, in terms of global excellency, in terms of exposure, in terms of saving money. Everything you will be getting top notch if you aspire to study abroad. Recently we have one student, I guess Mr. Atri, he did master from some university and he got an opportunity to do the internship in the Apple. So in India, it will be very difficult if you see the average colleges that these kind of companies coming and they are hiring you as an intern. But at the same time, if you take the bridge and route to the abroad, these opportunities become quite easier. So guys, I will be not taking you much of the time. I just wanted to share with you those facts which already you know. You are aware of those things, right? But somewhere down the line, you are not thinking about them. So I am summarizing 3 points. Never underestimated your skill and your knowledge and your power. Second, जितना ज्यादा नेटवर्किंग कर सकते उतने ज्यादा से ज्यादा नेटवर्किंग करो. Let me take one thing. You all do Instagram, you all do Facebook, Snapchat, all. Whenever you scroll down, whatever information that gets stuck into your mind, why not instead of that LinkedIn? Why not instead of that some that kind of portal which is conveying some information, which is conveying some knowledge to you? If per day you scroll such kind of application 30 times, 30 useful information you will be retaining into your mind, because it's our mindset,
whatever information we see in the form of the infographics or picture that gets stuck into our mind. You got my point or not? So first of all, start making your habit or atomic habit in such a direction that they align with your future aspiration. This is the strategic method of achieving your objective and goal with minimal effort in very short time. Third point is start applying abroad as soon as possible if you are planning and pursuing international education. So that's from my side. Now Mr. Ankit will come and he will put some light regarding some other important facts of the international education. Thank you. Please, Ankit. Okay, so first of all, welcome all of you. So first of all, I will tell you about Yourpedia Global. Thank you, sir. Yeah, so basically we started Yourpedia Global during COVID time. We were all basically working from home, didn't have a lot of things to do. So what we decided to, offer our expertise to students all like you. We have our team. So we have Dr. Vijayneder, famous personality. You all must have heard him at some point of your life. And then basically we have Rahul. He's doing his PhD from Rutgers, and basically he's a mentor for PhD students. I am Ankit. I have done my master's from University of Windsor, and then basically I've applied for PhD all around the globe. Got some of it. I will be joining, maybe next year, right, in the spring session, which is January intake, right. We have Sanyam. He used to do his PhD. He was basically enrolled in direct PhD. Decided to quit direct PhD from IIT Jodhpur, moved to Norway for his masters, and he also got his PhD in Denmark in the area of machine learning. We have Haresh, our previous student, applied for PhD in University College Dublin, and then basically he joined our team. We have Jyoti, curious case. She was doing her PhD from IIT Delhi, first year student. She did her masters from ISM Dhanbad in physics, but she decided to quit IIT Delhi and then basically moved to Penn State, just because in India, the average duration of PhD is somewhere at 6 years. We can say 5 to 6 years. But in Penn State and entire USA, you can basically finish your PhD within 5 years, maybe 4.5 years because of funding restrictions. होता क्या है कि basically आपको कुछ duration का funding offer होता है, but then basically अगर नहीं हो रहा है extension मिलता है, but ज़्यादा extension नहीं मिलता है, as you can see in India. 45,000 आ रहे हैं, 40,000 आ रहे हैं state government से, right? So this is basically our team, right? We actually, like motivation and everything is basically covered by Kailash sir and Kavita ma'am, and I'm pretty much sure you guys all seem motivated. So I mean, right now, what I want to do is I want to discuss few curious cases of Yourpedia Global. We basically have students from all around the world. We have students from IITs, NITs, and Tier 3 universities. So IITs and NIT students का वैसा profile होता है कि बेसिकली आपको हर चीज उसमें अच्छी लगेगी, फिर आप बिलीव करते हो कि अच्छा उनका प्रोफाइल अच्छा है तो हमारा प्रोफाइल अच्छा क्यों नहीं है, हमारा CGPA कम है, हमारे पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास बेसिकली इंटर्नशिप्स नहीं है. सो यू डिसाइडेड टू बेसिकली डू फॉर जॉब्स. बट वी हैव केसेस बहुत अच्छे एस्टेब्लिश MNCs में वो एस्टेब्लिश पोजीशंस में थे, बट समहाउ दिस दे बेसिकली डिसाइडेड टू क्विट. सो वी डिस्कस all of them, right? So the first case is Kirtan Bhatt. He is from Gujarat, and basically, he's from LD College of Engineering, someplace in Gujarat. Maybe if any one of you are from Gujarat, you might basically heard of this university or college, but frankly saying, I have not, right? But I think that this university comes under GTU, right? And you can see here, he's from IC background, and he didn't wrote GRE and TOEFL. He basically applied to this direct PhD, just after his bachelor's. With the 6.5 IELTS band, right? And he got into direct PhD, fully funded direct PhD, 37,000 AOD. This means 2,500 something, 2,500 or maybe 3,000 per month you will get, which is basically enough है survive करने के लिए. आप save कर लेंगे around maybe 2,200, right? अगर सब कुछ basically मिला के आप चल रहे हो, maybe आपका living style ज़्यादा है तो you can save 70% of this funding. Right? This is basically how have a lot of money once you do your PhD from India, from abroad, and then basically move to India, right? But yeah. So basically, but you can see here, right? इसमें क्या आपको motivation मिल रहा है?
First, you can see GRE. नहीं लिखा. We think that GRE is basically mandatory for admission, but let me tell you very frankly, GRE is not mandatory. There are some universities in this world who ask for GRE. If GRE is not an admission requirement, you guys don't have to waste your time writing GRE. You can get basically admission without GRE, right? So GRE is mandatory. That's basically a myth. आप लोग तभी GRE लिखोगे जब आपको यूनिवर्सिटी बोल रही है GRE लिखने के लिए. Otherwise, it's not an admission requirement. वो आपके एडमिशन में काउंट नहीं होगी. IELTS बैंड 6.5. ऑस्ट्रेलिया में जो बेसिकली मिनिमम IELTS बैंड की रिक्वायरमेंट है दैट इज 5.5. सो इफ यू आर गेटिंग 6 एंड देन बेसिकली आपका ओवरऑल प्रोफाइल अच्छा है, राइट, एंड यू कैन बेसिकली गेट द एडमिशन इन डायरेक्ट PhD. बाय द वे, ही गॉट डायरेक्ट PhD विदाउट एनी पब्लिकेशन. सो एक और मिथ आप यही आता है कि आप बेसिकली डायरेक्ट PhD अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास पब्लिकेशंस नहीं है. दैट्स अ मिथ. आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं मिलेगा कि बेसिकली हैविंग couple of publication, maybe one publication is an admission requirement. If you have it, that's good, but you know basically that's case जहाँ पे admission हुआ है without any publications, right? Okay, sir. Then we have Amisha from IISCR Bhopal. She has a really good profile. I will not basically lie to you, but you know you can see her profile. TOEFL जरूरत नहीं है. अगर आप IELTS लिख रहे हो तो आपको TOEFL लिखने की जरूरत नहीं है. IELTS and TOEFL both are basically equally accepted all over the world. But she also applied for direct PhD, 9 CGPA. I think she got a couple of publications, but you can see here she was from computer science, and she got basically $2,000 per month in University of Texas at Dallas. Now you will see $2,000 कम होंगे, but actually funding का क्या होता है बाहर कि आपको सिटी के इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग मिलता है. If you're going to cities nearby, let's say for example New York, then basically वहाँ पे क्या होता है, living expenses ज़्यादा होते हैं. तो basically you somehow get 3,000. 4 साल में बढ़ के, maybe 3 साल में बढ़ के वो आपका maybe 4,000 हो जाएगा, right? So at Dallas living expenses is not that high. So $2,000 is more than sufficient to survive. Okay? And then we have Gitartha, a really curious case. He's from Assam, Jorhat Engineering College. Assam, again, I have never heard of this university. Again, maybe you can say this guy is from tier 3 university, but aap log could be PUC ho. And then basically he got into lot of universities, maybe 13 plus admits in UK, and you can see in USA, right? So abhi kya hai ki Yourpedia mein I basically mentor bachelor students for masters, right, and direct PhD. So मेरा एक फंडा ये है कि बेसिकली अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो आपको बेसिकली मैं हर जगह अप्लाई करवा रहा हूँ, राइट? You can see in UK. So नहीं जाना है, that's perfectly fine. I'm not going to force you, but you can see here, his profile is very average. 8 CGPA, 4 projects, 2 internships. He was from mechanical engineering, but he wanted to switch to supply chain, right? So अभी supply chain में क्या है कि you can see the universities, Penn State, Rice and Wisconsin. सब कुछ ठीक था इसकी प्रोफाइल में, एडमिट्स 13 आ गए, बट केस इसका यहाँ पे फंस गया कि अच्छा पेन स्टेट में जाना है, राइस में जाना है या विस्कॉन्सिन में जाना है, क्योंकि ये तीनों यूनिवर्सिटी सप्लाई चेन में टॉप 10 रैंक्ड है. नाउ बेसिकली आई सैट विद हिम एंड राइस इज बेसिकली टोटली really prestigious, not an Ivy League but pretty much close to Ivy League. Penn State, you all know, very prestigious. Penn State, then we have Wisconsin. प्रॉब्लम ये थी कि पेन स्टेट और राइस में क्या था कि फीस बहुत ज़्यादा थी, ट्यूशन फीस. विस्कॉन्सिन में बहुत कम थी. बट द पॉइंट इज अगेन, आपके पास एडमिशन्स आते हैं, बट देन यू गेट बेसिकली कंफ्यूज कि अच्छा 13 एडमिट्स आ गए हैं, बट जाए कहाँ पे. ये तीनों जो यूनिवर्सिटी हैं बेसिकली इसकी एम्बिशियस कैटेगरी में थी. सेफ और मीडियोकर वो भूल जाओ. हम लोग के पास कल्चर ये है कि जब भी स्टूडेंट आता है, वी ऑलवेज आस्क देम टू अप्लाई in 3 different categories: average, safe and ambitious. And most of the time our students always get into ambitious, but यहाँ पे फीस कम थी. यहाँ पे एक आपको मोटिवेशन ये मिलता है, एक इम्पॉर्टेंट लेसन ये मिलता है कि you don't have to go to university जहाँ पे आपको फीस बहुत ज़्यादा लग रही है. क्यों? क्योंकि ये सारी यूनिवर्सिटीज टॉप 30 टॉप 10 रैंक है in the supply chain area. अभी इसमें क्या है कि ये हम लोगों ने कैसे डिसाइड किया कि इसको यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन ही जाना चाहिए.
देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि बेसिकली आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू सी इज द ज्योग्राफिकल लोकेशन, कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है कि नहीं है। विस्कॉन्सिन में इंडस्ट्रियल क्लस्टर ज़्यादा अच्छा है in the area of supply chain as compared to Penn State and Rice, right? So fees कम है, fees आधी है, and then basically he's doing really good. We decided he should go for Wisconsin, and right now he got his second internships as well. वहाँ पे कल्चर ही होता है मास्टर्स में, you can basically go for semester internship. So that is, I think that is also paid. Industry level में आपके basically pay होता है, right? And then basically, you know, he's doing really good. So he's right now in Wisconsin medicine. Okay, so Suyash, basically, you know, he was from electronics, but he wanted to switch to business analytics. I'm pretty much sure कुछ students का आप I don't know, like आपको business analytics area में placement हुई है कि नहीं है, but I'm pretty much sure कुछ students interested होंगे business analytics में. तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं. So मैं उनसे पहली चीज क्या पूछता हूँ कि अच्छा आपके पास रिसर्च एरिया क्या है आपका, आपने किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया है. आप लोग केमिकल इंजीनियर हो, राइट? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको बीए में कैसे फॉरेन में एडमिशन मिल सकता है. सो आपने बेसिकली रिसर्च किया, कोई प्रोजेक्ट किया A to Z, राइट? एंड देन बेसिकली लेट्स से आपने सिमुलेशन के ऊपर किया, राइट? एंड देन अभी क्या है कि सिमुलेशन में अगर आप कोई भी बेसिकली प्रोजेक्ट करते हो तो बेसिकली कोई भी इन जनरल कोई भी प्रोजेक्ट करते हो उसमें बेसिकली 3-4 एरिया का मिक्सचर होता है. वो एरियाज कैसे होते हैं, मान लो एग्जांपल के लिए कि आपने सिमुलेशन में किया, देन यू यूज प्रोग्रामिंग में क्या हुआ, आपका जो बैकग्राउंड बना वो प्रोग्रामिंग का बना, केमिकल जो है वो आपका बेसिकली मेन है. एंड देन बेसिकली आपने हल्का सा डेटा वगैरह यूज किया अपने प्रेजेंटेबल फॉर्म में, मे बी आपने कोई वैल्यूज एक्सट्रैक्ट की, क्या किया क्या नहीं किया, बट देन स्टिल यू नो आपका जो एरिया बना वो टोटली बेसिकली हल्का सा डेटा साइंस का बना, बिकॉज यू हैव यूज द डेटा. आई मीन मुझे नहीं पता कौन सा आपने बेसिकली एरिया लगाया, मे बी अपने स्टैट्स यूज किया, कुछ यूज किया, फॉर्मूला यूज किया, एक्सेल बनाई, दैट्स ऑल, राइट? बट नाउ बेसिकली यू हैव दिस प्रोफाइल फ्रॉम केमिकल टू प्रोग्रामिंग टू बेसिकली यू नो डेटा, राइट? सो अभी क्या है कि ये जो आपके पास प्रोग्राम दिख रहा है बीए का और डेटा साइंस का, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर. डजंट रियली मैटर आप आईसी से हैं, आप बेसिकली मैकेनिकल से हैं, आप कंप्यूटर साइंस से हैं, आप केमिकल से हैं, यू कैन बेसिकली स्विच टू बीए. और इसका जो अभी ग्रोथ है फॉरेन में एज कम्पेयर टू इंडिया में भी अच्छा है, बट फॉरेन में बहुत ही अच्छा है. करियर प्रोग्रेशन बहुत स्मूथली है इसका, एंड आई मीन जो सैलरी हाइक्स हैं एंड एवरीथिंग, दैट्स रियली गुड, राइट? तो बेसिकली अगर आप लोग को बीए में स्विच करना है तो ये आपके पास एक डोमेन है, बट आपके पास एक ब्रिजेस होने चाहिए. वो ब्रिजेस क्या क्या है कि बेसिकली आपके पास थोड़े बहुत कोर्स पर होने चाहिए कंप्यूटर साइंस के, प्रोग्रामिंग में. आई एम प्रीटी मच श्योर आपने फर्स्ट ईयर में किए होंगे, ठीक है? तो बेसिकली आप इस तरीके से थोड़े जो गैप है उसको फिल अप कर सकते हो. नाउ वी हैव क्यूरियस केस अथरी. आई थिंक कैलाश सर ने ऑलरेडी मेंशन किया इस स्टूडेंट को, वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट, रियली सिंसियर, graduated from I think VTU in Bangalore. He was working in microchips technologies for 2 years, but eventually decided to quit microchips. अच्छा पैकेज था, बट he decided to go for masters, क्योंकि मोटिवेशन ये था कि एक टाइम पे उसको लग रहा था कि इंडिया में ग्रोथ उतनी नहीं है, राइट? बट देन बेसिकली क्या है, इसका प्रोफाइल अच्छा था, 9 CGPA, and then basically 4 to 5 projects, 2 publications, really good letter of recommendations, right? Right now basically he is in University of Southern California, completed his intern and as an intern in Apple, and right now he's going for his internship in Nvidia, right? So I mean ये सब cases हैं. One more case, again fully funded PhD offer. So again you know thing is आप देख रहे हैं काफी सारी यूनिवर्सिटीज में आता है. फॉरेन में क्या होता है कि इफ यू आर गेटिंग इनटू PhD or direct PhD, you always basically get the funding, because without funding you can't basically do your PhD unless and until you are very rich, right? I'm pretty much sure you guys are not. So basically अभी क्या है कि ये 2024 का एप्लीकेंट था हम लोग का. Basically जो वेरिएशंस आप देख रहे हैं, again you know it depends on the city with where you are going, right? He was from chemical domain, right? Got that PhD. So again अगर ये कर सकते हैं तो basically आप भी कर सकते हैं. He was also from non-IIT and IIT background, right? So pretty much sure he's also from tier 3 university, right?
And then basically we have very curious case, Komal Khan. देखो इसमें क्या है कि she was from Bihar, non-English speaking background, right? And she was our first student in 2021, right? With nearly 62%, right? GRE 325 after 4 attempts, right? And then basically 100 plus interviews with the professor, 1000 plus emails to professor. She got basically into 4 university with 62%. 62% मतलब ये है कि उसका मिनिमम एडमिशन क्राइटेरिया भी बहुत ही हार्डली फुलफिल हो रहा था, बिकॉज इन यूएसए और रेस्ट ऑफ द कंट्री your CGPA should be converted into their equivalent system, and it has to be somewhere around 2.8, maybe 3, maybe 3.2, depending on the university. But still she got the admit. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास लो CGPA है, that should not be a deciding factor कि आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा. In Yourpedia basically we have culture कि अगर आपके पास CGPA less है, but there are lot of to your profile which can basically compensate your low CGPA. For example, आपके पास experiences जो हैं, for example research experience अच्छा है आपके पास publications हैं, maybe आपके पास internships अच्छी हैं, आपके पास skills अच्छी हैं. तो basically सारी चीज़ें जो हैं आपके जो minimum CGPA हैं उसको overcome करती है. That time has gone जब आपको basically admission मिलता था CGPA की basis के ऊपर. Now things have changed. The foreign universities, they don't really care about your IIT tag, your NIT tag, or if you are from tier 3 university in India, nobody really cares about from where you are. They are just interested in your profile. If you have a really good profile, that means things might happen to you. You can see all these are the cases जहाँ पे इनको पता भी नहीं था कि basically हमारा यहाँ पे admission हो सकता है, but still eventually they tried and get the admission. So regarding degrees, we have MASc and MSc. Masters के लिए अगर आप interested है तो basically you have 2 options. The first one is basically Engineering and the second one is Masters by Research, or maybe we can say Masters by Coursework, right? 2 option है. देखो ऐसा है कि अगर आप लोग interested हो Masters by Coursework में, you don't have to do anything. Just build your application package, start applying. Eventually you will get your admission, maybe with partial funding, right? Or maybe no funding. It totally depends on your profile and your university. But अभी क्या है कि अगर आप basically masters by research में apply कर रहे हो, which is just like MTech of India, 1 year of coursework, and then in the second year you have to do your research, as simple as that, right? Most of the universities in abroad, they always basically save their funding for the research based program. अगर आप लोग फंडिंग टारगेट कर रहे हो, यू शुड बेसिकली टारगेट रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम, बिकॉज वहाँ पे फंडिंग के सिनेरियोज बहुत अच्छे हैं एज कम्पेयर टू कोर्स वर्क प्रोग्राम. बिकॉज अगेन आप लोग रिसर्च करोगे, यू विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग. मे बी यू विल गेट TA शेप, मे बी यू विल गेट एन RA शेप. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल. मोस्ट रेगुलरली क्या होता है कि हम लोग समझते हैं कि US में फंडिंग्स पॉसिबल नहीं है, बट हमारे पास ऐसे भी केस है. आई हैव शोन द केस ऑफ अमीशा, राइट? ऑल द प्रोफाइल अच्छा था, बट अगेन उसको फंडिंग नहीं मिल पाई. उसका रीजन क्या था? मे बी यूनिवर्सिटी में फंड ना हो, फंड्स पूरे हो चुके हों, दैट्स अ सेपरेट सेट ऑफ डिस्कशन. बट अभी क्या है कि अगर आपको एक बार ऑफर लेटर आता है, बट देयर आर वेज टू अप्रोच फॉर फंडिंग. फंडिंग माइट बी पॉसिबल. कैसे? यू बेसिकली गेट एन एडमिट, देन यू स्टार्ट ईमेलिंग प्रोफेसर फॉर रिसर्च बेस्ड पोजीशंस. सो यू हैव एनी रिसर्च बेस्ड पोजीशंस, and the professor will simply tell you, okay, I do have position, but in this area. अगर आपको TA मिल रही है, you will paid hourly. अगर आपको RA मिल रही है, then maybe you will be paid maybe semesterly, maybe annually. It totally depends on the university, right? But still getting funding is really possible for MASc and basically direct PhD. ठीक है? जो होता ऐसा है कि आप लोग को बस एक चीज का इंश्योरिटी रखनी है, दैट इज मिनिमम एडमिशन रिक्वायरमेंट, और वो ऑलरेडी आपके हैं. मेरा ये मानना है कि बेसिकली आपका एडमिशन गेट के थ्रू होना मुश्किल है आपके मनपसंद यूनिवर्सिटी में, बट या लाइक इफ यू वांट टू गो टू अब्रॉड, यू डोंट हैव टू राइट एनी एग्जाम. मे बी IELTS, मे बी आपको GRE देना पड़े, बट दिस इज बेसिकली minimum admission requirement. All you're doing is writing this exam for minimum admission requirement.
अभी क्या है कि आपके पास प्रोफाइल ऑलरेडी बन चुका है, 4 इयर्स में आपने बहुत सारी एक्टिविटीज की हैं यहाँ पे, राइट, रिसर्च किया है, ये किया है, वो किया है, इंटर्नशिप किया है, यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ व्हाट यू हैव डन फॉर 4 इयर्स, राइट. सो आई मीन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आपको एग्जाम लिखने हैं नहीं लिखने हैं, दैट इज नॉट मैंडेटरी. अभी आप गेट में लिखोगे, गेट का स्कोर आएगा, देन बेसिकली काउंसलिंग, इंटरव्यू, देन यू गेट इनटू IITs. But you guys can basically start trying for abroad, as simple as that, right? Okay, so some external scholarship. हमारे पास बहुत सारे cases हैं जो scholarship के लिए students आते हैं. These are some of it, right? Depending कि आप basically कौन सा program target कर रहे हो. अगर basically you're targeting research-based master's program, in some countries basically funding comes with your offer letter. So you are not basically applying separately for any scholarship. You just apply for the university, and if your profile is good, university basically likes your profile, they might basically offer you scholarship with your offer letter. So no application portal for that. But there are some programs, अगर आप basically नहीं invest करना चाह रहे हो मास्टर्स प्रोग्राम में, then we do have lot of programs जहाँ पे हमारे students जा चुके हैं, right? The first one is Erasmus Mundus. सिर्फ यूरोप में होता है. That is basically, yeah, this is basically a student, Normula Raghavendra, from NIT Surat, right? He applied for basically Erasmus Mundus program, right? So I mean क्या है कि उस प्रोग्राम का हल्का सा ओवरव्यू दूं. That this program is interdisciplinary nature. There is one project, ठीक है, आप केमिकल से हो, आप मैकेनिकल से हो, आप कंप्यूटर से हो, आप IT से हो, you guys can apply अगर प्रोजेक्ट की डिमांड है, right? So I mean, if you want to apply for this scholarship, you guys should definitely apply. Fully funded scholarship, relocation allowances in each and every country, because in this scholarship you'll be spending your time in maybe 3 to 4 countries depending on the requirement. इसमें ये होता है कि आपको एक पेरेंट यूनिवर्सिटी चूज करनी होती है, वो यूरोप में कहीं भी हो सकती है, मे बी इन जर्मनी, बट देन बेसिकली आपको जो सेमेस्टर्स हैं वो और कंट्रीज में स्पेंड करने होते हैं, बिकॉज दैट्स बेसिकली कॉल्ड कोलैबोरेशन. मे बी आप फ्रांस में करोगे, मे बी जर्मनी में करोगे, तो दिस मीन्स बेसिकली यू विल हैव अ रियली गुड प्रोफाइल बिकॉज यू विल हैव स्ट्रॉन्ग LOR. रिसर्च है वेरी प्रेस्टिजियस. लास्ट ईयर 174 स्टूडेंट्स बेसिकली अवेल कर चुके हैं, राइट. बट द पॉइंट इज अगेन, होता क्या है इसमें कि स्कॉलरशिप्स में और भी हैं. I mean if you want to apply for DARD, you guys can. Again requirement ये है कि आपको basically प्रोग्राम देखना पड़ेगा, प्रोजेक्ट चूज करना पड़ेगा, and then basically you apply. Same as Erasmus Mundus. Then we have EIT in Europe, again fully funded program, and then basically we have Italy. Last अभी इस साल हमारे पास 14 selections है इटली के, fully funded masters, कोई कॉस्ट नहीं, ठीक है, and 7 of them basically went to Poly Milan. 8 of them basically went to some other universities, right? But yeah, I mean like these are the things which you should basically consider, right? अगर आप नहीं spend करना चाह रहे हैं, that is actually possible, right? Again, some profile, we have already discussed Gitartha. He's in Wisconsin medicine, doing his industrial. One more case, Rohan Kadu. He's basically from Pune, 7.9 CGPA, 8 backlog still last semester. तो जब ये मेरे पास आया था, मैंने कहा कि भाई पहले तू अपना ना एक बैकलॉग सर्टिफिकेट बनवा ले, दैट्स रख ले अपने पास, राइट. बट अभी क्या है कि बेसिकली स्टिल ही वेंट टू TU Delft, इलेक्ट्रॉनिक्स में आई थिंक टॉप 5 यूनिवर्सिटीज है, राइट. सो आई मीन स्टिल इट इज पॉसिबल, रियली गुड. एंड देन बेसिकली हैव समर्थ बख्शी, राइट. कोई इसमें बेसिकली एग्जाम नहीं दिया, बट इन जर्मनी दैट टाइम हैज गॉन, राइट. सो आई मीन अभी आपको काफ़ी डिफरेंट बेसिकली वो करने पड़ेंगे प्रोसेस, APS ये सब वगैरह करना पड़ेगा, दैट्स सेपरेट story. Then we have again Rajvendra from Uppsala University. You can see his profile. Backlogs थे. अगर आप लोगों के backlogs हैं तो अगर आप interested है, maybe you can basically take one backlog certificate. Maybe जरूरत ना पड़े depending on your requirement. Then we have Abhishek Thakur. His case already done his bachelor's from Thapar University and his master's from PAC. He wanted to apply for double masters because he wanted to switch his field from mechanical to supply chain. So उसने कैसे किया? He basically went to Dalhousie University in Canada with partial scholarship with TA.
So I mean, it's almost fully funded, right? Amisha, we have already discussed. We have a lot of selections. Pretty much sure, we are into this business for 3 years. More than 500 selections in all of this domain we have done, right? Some scope, again, scope का देखो ऐसा है कि अभी आप लोग मास्टर्स के लिए डिसाइड कर रहे हो और पीएचडी के लिए डिसाइड कर रहे हो डायरेक्ट पीएचडी के लिए ना. So first, basically, I will discuss the scope about direct PhD. अभी इसमें क्या है कि इंडिया में अगर आप पीएचडी करते हो तो अभी स्कोप आपका बहुत लिमिटेड है. मे बी यू गाइज विल गेट इनटू एकेडमिया, राइट? मे बी यू गाइज कैन बेसिकली गेट इनटू सम एमएनसीज. बट फॉरेन में ऐसा क्या है कि अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं हायरिंग ट्रेंड का, अगर आपने डायरेक्ट पीएचडी किया एंड देन बेसिकली यू डिसाइडेड टू डू 1 year ऑफ पोस्ट डॉक, राइट? जो अगर तो यूनिवर्सिटी में पोजीशंस हैं, यूनिवर्सिटी विल हायर यू. ऐसा नहीं होता बेसिकली अगर यूनिवर्सिटी, बाहर की यूनिवर्सिटी, अगर आप में रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रही हैं, राइट, एंड दे विल बेसिकली अलाउ यू टू लीव. अगर पोजीशंस हैं दे विल सिंपली हायर यू. मिनिमम सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो फॉरेन में है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 100K, and I'm talking about Canada. Figure might be high in USA. If you're going for the job after masters, it depends on your skills. But if you have really good skills, maybe it depends on basically a country to country. But still, maybe we are looking at the figure of 70 to 80K in USA, which is basically sufficient. Generous अगर आपके पास experience नहीं है, right? So I mean, like, this is basically our channel, so you can basically subscribe, right? Done. Yeah. So I mean, by the end क्या है कि so by the स्कोप क्या है कि आपके पास, आई मीन, ये तो पहले डिस्कस हो चुका है मैं कि आपके पास बहुत सारी फील्ड्स हैं. यू कैन गो इनटू ऑल ऑफ दिस फील्ड्स, राइट? सो आई मीन, रिगार्डिंग स्कोप यू आर ऑलरेडी बेसिकली अवेयर. नाउ अभी क्या है कि आपको डिसाइड करना है. यू आर बेसिकली इन क्रूशियल फेज. मे बी इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर द जॉब्स, यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब्स विद लाइक गेन सम एक्सपीरियंस, मे बी फॉर 2 years, मे बी 4 years. इफ यू सीम सेटिस्फाई, देयर इज नो रिक्वायरमेंट. बट अभी क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि आफ्टर करियर कहीं पे और जगह देखनी पड़ेगी अपने को, then basically you can apply for abroad. Abroad is always there for you. I'm again saying gaining admission in Indian university is difficult as compared to abroad. अगर आपके पास प्रोफाइल अच्छा है, प्रोफाइल अच्छा भी नहीं है, there are ways to basically show your profile, but still you guys can basically get into really good universities, right? I mean, these are the cases, right? So I mean, like, you can also do it, right? And then basically you can decide your career, right? So thank you all of you. Okay, that's it. So that was truly very insightful information given by Mr. Ankit, one of our mentors. So as he was discussing about direct PhD, I want to put some insights here. Recently, we have one girl, Anushka, and she's from D.Y. Patil University, and that is a private university, you all know, right? And currently she is in the final semester, like you people, and she is having a direct PhD with $2,700 funding in biotechnology. And straight away after completing her PhD, she will be going, after completing her bachelor, she will be going for PhD. So if she can do, why can't you people? So this journey or this discussion all begins from this note on. So guys, it's all about your capability. You all are capable. In today's time or today's era, the only concern, the only optimization which we need to do as an individual, that is, we need to have a right mentorship, a right objective, what actually we wanted to do and where we want to land up in the long run. I hope you all agree to this point, right? So now, in this entire conversation, if you have any kind of doubts, questionnaires related to India education, abroad opportunity, or any kind of the discussions, what all we had here, the house is open to all of you. You can ask your queries. See, I'm not sure by today, but trust me, somewhere down the line in your career, after 5 years, 6 years, when you will kind of the corporate world and all stuff, right? These all things will really help you a lot. So better have a clarity on the further process, what basically is going to happen further if you want to go for higher education, between and abroad.
Even if you are planning to go for industry, how basically that industrial experience you can scale up. Many people, in fact, if I discuss with you, 70% students are coming to us. They are working in hardcore industries, and now getting exposure from the industry, getting some good idea what actually they want to work, and they have some real world issue, real world problem which they want to solve by entering into academics, and these things they put in their research proposal and start approaching the professor. Way back, Kamalkant, one photo we shared, there it was mentioned she made 1,000 plus professors. You have seen that, right? So guys, in today's time, on LinkedIn, Google Scholar, research paper references, we can find very easily the faculty or supervisor who are currently contributing in those areas which are aligning with our future interest. So why not you start spending your daily efforts in that? Let me quote one example, please. If after 1 month, I will give you a list that these are the list of the 100 professors who are working in your domain. So that is a compound effect. If you start doing daily, you start shortlisting 2 to 3 professors, right, related to your interest. After 1 month, it will be 90 or 100 professors. So guys, these are the very small effort which are very fragmented. We don't care about these all stuff, right? But to be honest, they are having a very pivotal role in achieving our excellence in terms of the future aspirations, right? So we are ending this session here, and Kavita ma'am will be, sharing some notes. So again, any kind of doubt, queries you had regarding the process, what all we discussed here, and we shared the profiles of many students with you. You want to discuss any of the case with us, we are open here, and you are most welcome to ask a question, please. Yes, ma'am. Yes, any questions? Okay, so just to conclude, I will not take more of your time, and see, basically at Yourpedia, we are guiding you for all these things, how to prepare your documents, how to approach the professors, how to approach the universities, and all the application process. And moreover, we are taking your classes, we are preparing you for GRE, IELTS and all that, all those exams also. Okay, so this is what I wanted to tell you. Now, I just want to know how many of you got everything. Can you raise your hands? And how many of you are sleepy? How many of you are sleepy? Nobody is raising their hands. See, you should be like frank when you are interacting. Okay, if you are sleepy, you raise your hand. Fine? Okay? Okay, thank you everyone.